हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में देखने वाले हैं केसेस लॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कलेक्टिंग बैंक, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू ए कलेक्टिंग बैंक। क्या क्या प्रोटेक्शन मिल सकता है जो कलेक्टिंग बैंक रहता है, राइट। सो हमारा जो होता है सेक्शन 131, इंपॉर्टेंट दिस वन, दैट इज सेक्शन 131 ऑफ कलेक्टिंग of NI Act grants protection to a collecting banker. Non-liability of a banker receiving payment of check. Conditions for protections. इसमें लाइबिलिटी उसको बैंकर को नहीं होता है इन विच केस दे आर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ चेक, दैट इज कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलता है विच सेक्शन, दैट इज 131 ऑफ NI एक्ट, दैट इज नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंक। ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग में ये होता है दैट इज दीज आर द ड्यूटीज here in short we are just discussing duty to open an account, ड्यूटी टू ओपन एन अकाउंट विथ रेफरेंसेस, अकाउंट खोलने के लिए जो ड्यूटी रहता है उनका। ड्यूटी टू फॉलो अप द रेफरेंसेस वेयर द रेफर इज नॉट नोन, अगर रेफरी आपको नॉट नो मतलब आपको पता ही नहीं और नोन है उस केस में हम फॉलो अप करते हैं। देन ड्यूटी टू एंश्योर क्रॉसिंग, जो क्रॉसिंग है उसको इंश्योर करना होता है, राइट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बैंकर टू इंश्योर दैट द चेक इज क्रॉस्ड स्पेसिफिकली टू हिमसेल्फ एंड इफ द चेक इज क्रॉस्ड टू सम अदर बैंकर दे शुड रिफ्यूज टू collect it. Similarly, where the check is crossed to a specific account, then the credit the same to another account without necessary inquiry would make him liable. अगर कोई क्रॉसिंग हुआ है particular to a account, we need to make sure, we need to confirm from the customer. And अगर कोई particular account, if the crossing is to mention for a particular account, we need to pay that amount to that mentioned account only, right. And if we are also paying to some other account, then without proper investigation, then the banker will be the collecting banker will be the responsible. Then further on the grounds of negligence, then duty to verify the instruments, any apparent defects in the instruments, अगर like हमें UV रे में चेक करना होता है और जो ऑल्ट्रेशन है उसको चेक करना होता है। सो ये हमारा ड्यूटी रहता है कलेक्टिंग बैंकर का। ड्यूटी टू टेक इनटू अकाउंट द स्टेट of customers account. So negligence of collecting bank in collection checks payable to third parties, अगर कलेक्टिंग बैंक जब कोई हम थर्ड पार्टी को चेक देते मतलब पेमेंट करते हैं एंड हायर वैल्यू, इन दैट केस द कलेक्टिंग बैंकर नीड टू what the collecting banker need to do, thus he need to do some at least if nothing is available, then you can do whatever the phone number is available in the customer's account, you can do the telephonic verifications. And if the check is in like intersol, like that not belongs to your base branch, then you can send a mail and take the confirmation from the base branch. After that you need to pay the amount, right. So these are the duties and protection, what are the in which conditions the protection, these are the a collection banker need to do the correct things, right. So next हमारा है ये वाला जो है बहुत ईजी है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरोवर्स। एक है हमारा माइनर, ए माइनर इज ए पर्सन जिसका एज, माइनर कौन है जिसका एज 18 ईयर्स से लेस होता है, राइट। सो 18 ईयर्स से ज़्यादा हो जाएगा देन उसको मेजर हो जाएगा। देन उसको जब माइनर के क्या होता है, गार्डियन इज नेचुरल एंड अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, एक नेचुरल गार्डियन होता है और कोई गार्डियन भी एज पर द लॉ दे कैन अपॉइंट, राइट। गार्डियंस क्या होता है, देखें 3 टाइप्स ऑफ गार्डियंस, एक होता है नेचुरल गार्डियन फादर एंड मदर, एक होता है टेस्टिमेंट्री गार्डियन, ए गार्डियन अपॉइंटेड बाय द विल, अगर कोई विल बना के गए हैं एंड नेचुरल तो उस केस में दैट गार्डियन विल बी टेस्टिमेंट्री गार्डियन। नेचुरल गार्डियन में अपॉइंट समबडी टू एक्ट एज ए गार्डियन आफ्टर हिज हर डेथ थ्रू द विल, बट सच गार्डियन विल कम इन टू पिक्चर ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द नेचुरल गार्डियन। इन केस ऑफ हिंदूज ऑन द डेथ ऑफ द फादर एज वेल एज द मदर, इन केस ऑफ फादर एंड मदर बोथ डेथ एज पर द हिंदूज, द नेचुरल गार्डियन if there will be will, then the another guardian, as per the will, he can guard the minor till the point of measure, right. So that is called testamentary guardian. Next होता है legal guardian, guardian appointed by the court, if neither natural guardian, testamentary guardian, then appointed by the court. If the guardian is appointed by the court, then that is called legal guardian. So there are 3 types, very important. When a guardian of a Hindu minor ceases to be Hindu and he becomes hermit or sannyasi, he ceases to be natural guardian. As per the section 11 Indian Contract Act, a minor is not permitted to enter into contract and the contract entered into by him is void ab initio. Remember this point, void ab initio, and he is not
competent to enter into any contract. A minor should not be into any contract. So कौन सा है section 11 of Indian Contract Act 1872. Remember this. They will ask a minor. They will give one case study. Ram is a person who is a minor. He is not able to do in any types of contract. So as per which law? So they will mention Contract Act 1872, 1874 like that. And which sections 11, 12, 13, 14. So you need to answer 11 section 11 of Indian Contract 1872. Right. So they are very easy to answer. Just remember these points. सो इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बोरोवर। टाइप्स ऑफ बोरोवर में क्या होता है, इंडिविजुअल बोरोवर, राइट, और पार्टनरशिप फॉर्म, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, उस केस में जो हेड होते हैं उनको कर्ता बोला जाता है, राइट। सो नेक्स्ट है कंपनीज, statutory companies, trust, company societies. Account of visually challenged persons. Then a visually challenged person is competent to conduct like any other. वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. सिग्नेचर ऑफ द थंब इम्प्रेशन ऑफ द ब्लाइंड शुड बी अटेस्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट विटनेस टू द इफेक्ट एंड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन टू द ब्लाइंड पर्सन इन हिज प्रेजेंस. जो ब्लाइंड पर्सन रहते हैं वो, सो इन दैट केस द बैंकर नीड टू और द बैंकर or whoever the person need to explain the conditions and rule terms to the persons clearly, right? And one witness should be there. Cash deposits and withdrawal by the blind person should be handled by the officer of the bank, right? And RBI has advised banks to ensure that all the banking facilities, check book facility, third party ATM, net banking, locker, all the facilities are invariably offered to the visually challenged without any discriminations. All the facilities they can avail, right? So account of an illiterate person, this is very important. So these are the things we are discussing now. Account of a illiterate person. An illiterate person is competent to conduct like any other. उसको भी सब कुछ facility मिलेगा and they can also be in the contract. So checkbook is not issued to the illiterate persons. Illiterate deposit for cash payments. For cash payment, checkbook is not issued to the illiterate persons. Checkbook can be issued for making statutory payments, post-dated checks for repayment of installment of loans. For cash payments, checkbook is not issued, but for post-dated checks for the installment of payment, in that case, checkbook can be issued. And in such cases, checkbook will be crossed account pay, and thumb impression of the illiterate person will be verified on such cases at the time of issue of the checkbook by competent authority. तो ये जो केसेस में हम चेकबुक इशू कराएंगे, उस केसेस में क्या होगा ना, हम उसको क्रॉस किया जाएगा. इट विल बी पेड टू द अकाउंट ओनली, right? So and at the time of issue there will be a thumb impression, right? So it should be verified by the competent authority of the bank. और एक हमारा होता है कौन सा फैसिलिटी रहती है, जॉइंट अकाउंट्स. सो जॉइंट अकाउंट्स पे जो जो कंडीशंस रहता है, फर्स्ट कंडीशन रहता है आइदर और सर्वाइवर. इस केस में एनीवन कैन ऑपरेट द अकाउंट टिल बोथ लाइफ, आइदर एंड सर्वाइवर. जैसे ए एंड बी बोथ आर जॉइंट अकाउंट्स, उनके केस में सो ए आइदर एंड बी दोनों के केस में कोई भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है टिल alive, both are alive. After the death of the either of them, the bank can pay the balance to the survivor without any formality. So अगर एक का डेथ हो गया, then bank will pay the amount to B because B has also the authority to continue the account also, right? So in that case, B can also operate the account, right? So to be opened jointly, so A and B इस केस में अगर जॉइंट अकाउंट है, मतलब A plus B, तो इस केसेस में बोथ नीड टू बी प्रेजेंट. अकाउंट विल बी अपलोडेड बाय बोथ जॉइंटली टिल बोथ आर अलाइव. इफ वन ऑफ द टू, ए अगर एक्सपायर हो गया, देन बी द बैंक वुड पे द फाइनल अमाउंट टू द सर्वाइवर अलोंग विद ऑल द लीगल हेयर्स ऑफ द डिकेस्ड. सो जॉइंट अकाउंट के केसेस में इफ बोथ जॉइंटली, देन अमाउंट टू फाइनल अमाउंट टू द सर्वाइवर, दैट इज टू बी, एंड विद द विटनेस विद द लीगल हेयर्स ऑफ द डिकेस्ड. In that case, we need to take the consent of the legal heirs, right? In E and S, legal heirs consent doesn't require. So jointly or by a survivor. So in that case, A and B or survivor. So account can be opened by both, all the person jointly during the lifetime. In the death of anyone, the balance is payable to the surviving persons jointly, right? So after that the amount will be paid to the surviving persons. अगर A B C है, अगर A का डेथ हो जाता है, then B and C को पेमेंट मिलेगा, and they can do it in jointly, right? सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फार्मर एंड सर्वाइवर. फार्मर एंड सर्वाइवर के केस में टिल द फर्स्ट नेम
is valid. Farmer, जैसे A and B. The second named person has no right to withdrawal of the account. After the date of the first named person, the payment will be made to the second named person. The farmer F and S के केस में, farmer and survivor केस में A and B के बीच में farmer है A and B. So इस केस में जो फर्स्ट नेम्ड है अगर A है B है सेकंड नेम्ड, so जब तक A alive रहेगा A, till that point B cannot operate the account. A is the only primary authorized account holder of that account. And जब A का डेथ हो जाएगा then only B can operate the account and the amount will be paid to the second named persons, right? So till the leave of the A, B has nothing to do because he is the first person, he is the second person. In that case, first named person is the farmer and second named is the survivor, right? So these are the important things. So in the next video we are going to discuss the partnership firms and some other important topics. So till that point, like, share and subscribe this fast track series from our team Kraken, so that you can avail more and more printers, so that it will be easy to help to revise and also have some idea about the things and click the correct options in the exams. It will help you to crack at least the passing mark, that is more than enough. So thanks for watching the videos. Subscribe and click the bell button so that you will get the early notifications of our all uploaded videos. Thank you.